1. Proclivity, noun. रुझान, रग़बत, रुजू. A tendency to choose or do something regularly, an inclination or predisposition towards a particular thing. 2. Civility, noun. अखलाक, खुल्क, शाइस्तगी, इंसानियत, मुरवत से. 3. Venom, noun. सांप वगैरह का जहर. A poisonous substance secreted by animals such as snakes, spiders, and scorpions and typically injected into prey or aggressors by biting or stinging. 4. Immense, adjective. बहुत ज़्यादा, अजीम, दिव्यकल. Extremely large or great, especially in scale or degree. 5. Vindictive, adjective. कीना परवर, इंतकामी. Having or showing a strong or unreasoning desire for revenge. 6. Deliberate, adjective. गौर व खोज करना, सोचा समझा. Done consciously and intentionally. 7. Partisan, noun. कट्टर, सख्तगीर, हामी, मुतासिब. A strong supporter of a party, cause, or person. 8. Dislodge, verb. निकाल देना, मुकर्ररा जगह से हटाना. Knock or force out of position. 9. Ablaze, adjective. आतिश गिरफ्ता, जलता हुआ, आग से रोशन. Burning fiercely. 10. Curiosity, noun. तजस्सुस, दिलचस्पी, शौक. A strong desire to know or learn something. 11. Forestall, verb. पहले से ही काम कर लेना, पेशबंदी करना, रोकना. Prevent or obstruct an anticipated event or action by taking advance action. 12. Inferior, adjective. कम रुतबा, अदिन, कमतर, complex. Lower in rank, status, or quality. 13. Prognosis. तशखीस मर्ज. The prospect of recovery or anticipated from the unusual course of disease or peculiarities of the case. 14. Rapacious, adjective. शिकार खेलना, शिकारी, लुटेरा. Aggressively greedy or grasping. 15. स्टार, वर्ब, फाका कशी, भूख से मरना. Suffer or die or cause to suffer or die from hunger. Example, she left her animals to starve. Pakistan's mad rush towards the cliff edge and its evident proclivity for collective suicide deserves a diagnosis, followed by therapy. Contrary to what some may want to believe, this pathological condition is not one man's fault and it didn't develop suddenly. To help comprehend this, for a moment imagine the state as a vehicle with passengers. It is equipped with a steering mechanism, outer body, wheels, engine, and fuel tank. Politics is the steering mechanism. Whoever sits behind the wheel can choose the destination, speed up, or slow down. Choosing a driver from among the occupants requires civility, particularly when traveling along a dangerous ravine's edge. If the language turns foul, and respect is replaced with anger and venom, animal emotions take over. Imran Khan started the rot in 2014 when, perched atop his container, he hurled loaded abuse upon his political opponents. Following the Panama Exposé of 2016, he accused them, quite plausibly in my opinion, of using their official positions for self-enrichment. How else could they explain their immense wealth? For years, he has had no names for them except Chor and Daku. But the shoe is now on the other foot and Khan's enemies have turned out no less vindictive, abusive, and unprincipled. They have recorded and made public his recent intimate conversations with a young female, dragged in the matter of his out-of-wedlock daughter, and exposed the shenanigans of his close supporters. More seriously, they have presented plausible evidence that Mr. Clean swindled billions in the Al-Qadir and Tasha Khana cases. Which is blacker, the pot or the kettle? Take your pick. Pakistan's downward spiral owes to misplaced priorities, the army's role, and deliberate miseducation. Everyone knows politics is dirty business everywhere.
Just look at the antics of Silvio Berlusconi, Italy's corrupt former prime minister. But if a vehicle's occupants include calm, trustworthy adjudicators, the worst is still avoidable. Sadly, Pakistan is not so blessed. Its higher judiciary has split along partisan lines. The outer body is the army, made for shielding occupants from what lies outside. But it has repeatedly intruded into the vehicle's interior, seeking to pick the driver. Free and fair elections are not acceptable. Last November, months after the Army-Khan romance soured, outgoing Army Chief General Qamar Javed Bajwa confessed that for 7 decades the army had unconstitutionally interfered in politics. But a simple mea culpa isn't enough. Running the economy or making DHAs is also not the army's job. Officers are not trained for running airlines, sugar mills, fertilizer factories, or insurance and advertising companies. Special exemptions and loopholes have legalized tax evasion and put civilian competitors at a disadvantage. A decisive role in national politics, whether covert or overt, was sought for personal enrichment of individuals. It had nothing to do with national security. While Khan has focused solely on the army's efforts to dislodge him, his violent supporters supplement these accusations by disputing its unearned privileges. When they stormed the GHQ in Rawalpindi, attacked an ISI facility in Pindi, and set ablaze the Corps commander's house in Lahore, they did the unimaginable. But, piquing everyone's curiosity, no tanks confronted the enraged mobs. No self-defense was visible on social media videos. The bemused Baloch ask, what if an army facility had been attacked in Quetta or Gwadar? Would there be carpet bombing? Artillery barrages? The wheels that keep any economy going are business and trade. Pakistanis are generally very good at this. Their keen sense for profits leads them to excel in real estate development, mining, retailing, hoteliering, and franchising fast food chains. But this cleverness carries over to evading taxes, and so Pakistan has the lowest tax-to-GDP ratio among South Asian countries. The law appears powerless to change this. When a trader routinely falsifies his income tax return, all guilt is quickly expiated by donating a dollop of cash to a madrasa, mosque, or hospital. In February, the pious men of Markazi Tanzim Tajiran, Central Organization of Traders, threatened a countrywide protest movement to forestall any attempt to collect taxes. The government backed off. The engine, of course, is what makes the wheels of an economy turn. Developing countries use available technologies for import substitution and for producing some exportables. A strong engine can climb mountains, pull through natural disasters such as the 2022 monster flood, or survive COVID-19 and events like the Ukraine war. A weak one relies on friends in the neighborhood, China, Saudi Arabia, and UAE, to push it up the hill. By dialing 3 letters, I/M/F, it can summon a tow truck company. The weakness of the Pakistani engine is normally explained away by various excuses: inadequate infrastructure, insufficient investment, state-heavy enterprises, excessive bureaucracy, fiscal mismanagement, or whatever. But if truth be told, the poverty of our human resources is what really matters. For proof, look at China in the 1980s, which had more problems than Pakistan but which had an educated, hard-working citizenry. Economists say that these qualities, especially within the Chinese diaspora of the 1990s, fueled the Chinese miracle. The fuel, finally, is the human brain. When appropriately educated and trained, it is voraciously consumed by every economic engine. Pakistan is at its very weakest here. Small resource allocation for education is just 1/10 of the problem. More importantly, draconian social control through schools and an ideology-centered curriculum cripples young minds at the very outset, crushing independent thought and reasoning abilities. Leaders of both PTI and PDM agree that this must never change. Hence, Pakistani children have, and will continue to have, inferior skills and poorer learning attitudes compared to kids in China, Korea, or even India. The prognosis,
it is hard to see much good coming out of a screeching catfight between rapacious rivals thirsting for power and revenge. None have a positive agenda for the country. While the much-feared second breakup of Pakistan is not going to happen, the downward descent will accelerate as the poor starve, cities become increasingly unlivable, and the rich flee westwards. Whether or not elections happen in October and Khan rises from the ashes doesn't matter. To fix what has gone wrong over 75 years is what's important. The writer is an Islamabad-based physicist and writer. Published in Dawn, May 13, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पाकिस्तान की पागल दौड़ और इज्तिमाई खुदकुशी के लिए इसके वाज़े रुझान की तशख़ीस की ज़रूरत है, जिसके बाद थेरापी की जाती है। इसके बरक्स जो कुछ लोग यकीन करना चाहते हैं, ये पैथोलॉजिकल हालत किसी एक शख्स की गलती नहीं है और ये अचानक पैदा नहीं हुई। इसको समझने में मदद करने के लिए एक लम्हे के लिए रियासत को मुसाफिरों के साथ एक गाड़ी के तौर पर तसव्वुर करें। ये स्टीयरिंग मैकेनिज्म बैरूनी बॉडी, पहियों, इंजन और फ्यूल टैंक से लैस है। सियासत स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। जो भी पहिए के पीछे बैठता है वो मंजिल का इंतखाब कर सकता है, रफ्तार बढ़ा सकता है, सुस्त कर सकता है। रिहायशियों में से ड्राइवर का इंतखाब करने के लिए तहजीब की ज़रूरत होती है, खास तौर पर जब किसी खतरनाक खाई के किनारे पर सफ़र करते हैं। अगर ज़ुबान खराब हो जाए और एहतराम की जगह गुस्सा और जहर ले लिया जाए तो जानवरों के जज्बात गालिब आ जाते हैं। इमरान खान ने 2014 में इस वक्त सड़ना शुरू किया जब उन्होंने अपने कंटेनर के ऊपर बैठकर अपने सियासी मुखालिफिन को गालियां दी। सना 2016 में पनामा केस सामने आने के बाद उन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो अपने सरकारी ओहदों को खुद को अफजूदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी बेपनाह दौलत की वजाहत कैसे कर सकते हैं? बरसों से इनके पास चूर और को के अलावा उनका कोई नाम नहीं था। लेकिन जूता अब दूसरे पांव पर है और खान के दुश्मन भी कम इंतकामी, बदसलूकी और बेउसूल साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने एक नौजवान खातून के साथ उनकी हालिया करीबी बातचीत को रिकॉर्ड और आम किया है, उनकी शादी से बाहर की बेटी के मामले में घसीटा है और उनके करीबी हामियों के जज्बात को बेनकाब किया है। इससे भी ज्यादा संजीदा बात यह है कि उन्होंने इस बात के ठोस सबूत पेश किए हैं कि मिस्टर कलीन ने अलकादिर और तोशा खाना के मुकदमात में अरबों रुपए की धोखाधड़ी की। कौन सा काला है, बर्तन या केतली? अपना इंतखाब करें। पाकिस्तान के ज़वाल की वजह गलत तरजीहात, फौज का किरदार और जानबूझकर गलत तालीम है। हर कोई जानता है कि सियासत हर जगह गंदा कारोबार है। इटली के बदनवान साबिक वजीर आज़म सिल्वियो बेर्लुस्कोनी की हरकतों को देखें। लेकिन अगर किसी गाड़ी में सवार अफराद में पुरसुकून, काबिल एतमाद फैसला कुन शामिल हैं, तो बदतरीन सूरत हाल से बचा जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान इतना बाबरकत नहीं है। इसकी आला अदलिया जमाती खुतूत पर तकसीम हो चुकी है। बैरूनी जिस्म फौज है जो बाहर की चीजों से रहने वालों को बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसने ड्राइवर को चुनने के लिए गाड़ी के अंदरूनी हिस्से में बार बार दरअंदाजी की है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात काबिल कबूल नहीं हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एतराफ़ किया था कि 7 दहाइयों से फौज ने सियासत में गैर आईनी मुदाखलत की है। लेकिन एक सादा सी कल्पा काफ़ी नहीं है। मईशत चलाना, DHA बनाना भी फौज का काम नहीं है। अफसरान को एयरलाइंस, शुगर मिल्स, फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग कंपनियों को चलाने की तरबियत नहीं दी जाती है। खुसूसी इस्तिस्ना और खामियों ने टैक्स चोरी को कानूनी शक्ल दे दी है और सिविलियन हरीफों को नुकसान पहुंचाया है। कौमी सियासत में फैसला कुन किरदार, चाहे वो पोशीदा हो या ज़ाहिरी, अफराद की ज़ाती अफजाइश के लिए तलाश किया गया। इसका कौमी सलामती से कोई लेना देना नहीं था। अगरचे खान ने सिर्फ फौज की जानिब से उन्हें हटाने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज की है, लेकिन उनके पुरतशद्दुद हामी इन इल्ज़ामात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जब उन्होंने रावलपिंडी में GHQ पर धावा बोल दिया
पिंडी में ISI के ठिकाने पर हमला किया और लाहौर में कोर कमांडर के घर को आग लगा दी तो उन्होंने ऐसा काम किया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन हर एक के तजस्सुस को देखते हुए किसी भी टैंक ने मुश्तइल हुजूम का सामना नहीं किया। सोशल मीडिया वीडियोज़ पर अपना दिफा करने वाला कोई शख्स नजर नहीं आया। हैरतज़दा बलूच पूछते हैं कि अगर क्वेटा गवादर में किसी फौजी तंसीब पर हमला किया जाता तो क्या होता? क्या कारपेट बमबारी होगी? तोप खाने के बैराज? वो पहिए जो किसी भी मईशत को चलते रहते हैं वो कारोबार और तिजारत हैं। पाकिस्तानी आमतौर पर इसमें बहुत अच्छे हैं। मुनाफा के लिए उनकी गहरी समझ उन्हें रियल एस्टेट की तरक्की, कानकनी, खुर्दा फरोशी, होटल नंग और फास्ट फूड चेन्स की फ्रेंचाइज नग में महारत हासिल करने की तरफ ले जाती है। लेकिन यह चालाकी टैक्स ओहे से बचने पर मुनहसर है और इसी वजह से पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासुब जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। ऐसा लगता है कि कानून इसको तब्दील करने के काबिल नहीं है। जब कोई ताजिर बाकायदगी से अपने इनकम टैक्स रिटर्न को जाली बनाता है तो मदरसे, मस्जिदा, अस्पताल को नकद रकम का एक टुकड़ा अतिया करने से तमाम गुनाहों का फौरी अजाला हो जाता है। फरवरी में मरकजी तंजीम ताजिरान ट्रेडर्स की मरकजी तंजीम के नेक लोगों ने टैक्स जमा करने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए मुखगिर एहतजाजी तहरीक चलाने की धमकी दी थी। हुकूमत पीछे हट गई। इंजन यकीनन वो है जो मईशत के पहिए को मोड़ता है। तरक्की पजीर ममालिक दरामदात के मुतबादिल और कुछ बरामदी अशिया की पैदावार के लिए दस्तयाब टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करते हैं। एक मजबूत इंजन पहाड़ों पर चढ़ सकता है, 2022 के तबाहकुन सैलाब जैसी कुदरती आफात से गुजर सकता है, कोविड-19 और यूक्रेन जंग जैसे वाकयात से बच सकता है। एक कमजोर मुल्क अपने हमसाया ममालिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दोस्तों पर इन्हिसार करता है ताकि इसे पहाड़ी से ऊपर धकेला जा सके। 3 हरूफ I/M/F डायल करके ये टू ट्रक कंपनी को तलब कर सकता है। पाकिस्तानी इंजन की कमजोरी को आमतौर पर मुख्तलिफ बहानों से बयान किया जाता है, जैसे नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर, नाकाफी सरमायाकारी, रियासती भारी कारोबारी इदारे, हद से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, माली बदइंतजामी, कुछ और। लेकिन अगर सच कहा जाए तो हमारे इंसानी वसाइल की गुर्बत ही असल में अहमियत रखती है। सबूत के तौर पर 1980 की दहाई में चीन को देखें, जिसके मसाइल पाकिस्तान से ज्यादा थे लेकिन जिसके पास तालीम याफ्ता और मेहनती शहरी थे। माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि उन खुसूसियात ने खास तौर पर 1990 की दहाई के चीनी तारकीन वतन में चीनी मुजिज़े को हुआ दी। ईंधन आखिर में इंसानी दिमाग है। जब मुनासिब तौर पर तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता होता है तो उसे हर मुआशी इंजन के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान यहाँ अपनी सबसे कमजोर हालत में है। तालीम के लिए छोटे वसाइल की तकसीम इस मसले का सिर्फ 10वां हिस्सा है। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि स्कूलों के जरिए जालिमाना समाजी कंट्रोल और नजरिए पर मबनी निसाब नौजवान जहनों को शुरू में ही अपाहज कर देता है और आजाद इना सोच और इस्तेदलाल की सलाहियतों को कुचल देता है। PTI और PDM दोनों के रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसमें कभी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि चीन, कोरिया यहाँ तक कि भारत के बच्चों के मुकाबले में पाकिस्तानी बच्चों में कमतर सलाहियतें और सीखने का रवैया खराब है और रहेगा। पेशगोई, इक़्तिदार और इंतकाम के प्यासे हरीफों के दरमियान होने वाली लड़ाई से बहुत कुछ अच्छा निकलता देखना मुश्किल है। किसी के पास भी मुल्क के लिए मुस्बत एजेंडा नहीं है। अगरचे पाकिस्तान के दूसरे टुकड़े होने का खदशा नहीं है, लेकिन गरीब ओहे के भूखे रहने, शहरों के रहने के काबिल ना होने और अमीर मगरिब की तरफ भागने के साथ नीचे की तरफ तेजी से उतरेंगे। अक्टूबर में इंतखाबात हों या ना हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खान राख से उठेंगे। 75 सालों में जो कुछ गलत हुआ है इसे ठीक करना अहम है। मजमून निगार इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तबीयात दान और मुसन्निफ हैं। अखज़ शुदा बतारीख 13 मई 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.